Hello friend, how are you? I think you have enjoyed a lot in the previous lecture of the signal and system, and this is the continuation of the signal and system in which we have previously discussed the various type of system, but three system is left, that is stability for checking stability, and stability as well as dynamic and statics, and one more is left. So we'll continue this with the static, dynamic and stability and unstable system. Okay, now see what is a stable system actually. So before that, let me continue that the left topic, that is dynamic and static. So what is a static system and what is dynamic system? A system is static if the input and output are observed at the same instant at t equals to t0. मतलब a system is static if the input and output are observed at the same instant. A system is static तब होगा जब इनपुट और आउटपुट हम सेम इंस्टेंट पे मिलेगा. मतलब अगर हम टी नॉट पे देते हैं, हम जस्ट लाइक टी इक्वल्स टू टी नॉट पे दिए हम इनपुट, तो आउटपुट भी हमें टी नॉट पे मिलनी चाहिए. ओके, टी नॉट पे ही मिलनी चाहिए. ओके, या फिर डिस्क्रीट की बात करें तो एन इक्वल्स टू एन नॉट हो जाएगा. ओके, कहने का मतलब आउटपुट टाइम जो होगा वो हमारा इनपुट टाइम के बराबर होगा. ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, y ऑफ x इक्वल्स टू x ऑफ y ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ t. मतलब ये हमारा सिस्टम दिया हुआ है, y ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ t. इफ़ वी टेक चेक एट y 0 टाइम इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, तो ये x ऑफ 0 हो जाएगा. मतलब ये प्रेजेंट आउटपुट का जो रिस्पॉन्स है वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट इनपुट के एक्साइटेशन पे. प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एक्साइटेशन, दैट इज एक्साइटेशन. मतलब प्रेजेंट आउटपुट मतलब रिस्पॉन्स जो है हमारा वो डिपेंड कर रहा है इस पे ही, है ना. सो दिट इज कॉल्ड स्टैटिक सिस्टम. स्टैटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो मेमोरी लेस सिस्टम होता है. ओके, मेमोरी लेस सिस्टम भी बोलते हैं. सिमिलरली एक ऐसा सिस्टम जिसको हम डायनेमिक बोलेंगे, अगर इनपुट और आउटपुट ऑब्जर्व नहीं होगा सेम इंस्टेंट पे, देन इट इज कॉल्ड डायनेमिक. और सिस्टम जैसे वाई, हाँ एक और क्वेश्चन हम करेंगे इसमें. जैसे देखिए वाई ऑफ टी इक्वल्स टू 2x स्क्वायर इंटू टी. ओके ओके, y of t इक्वल्स टू 2x स्क्वायर टी. नाउ चेक एट t इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हैं हम, तो y0 क्या हो जाएगा हमारा, 2x स्क्वायर 0. मतलब प्रेजेंट आउटपुट जो है, प्रेजेंट रिस्पॉन्स डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट इनपुट, है ना. प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट वैल्यू ओनली. ओके, so that means particular output response depend on the particular excitations only, not other. Okay, and for dynamic system, let me take an example. If it is y of t equals to x of t square, let us suppose that, then y of 2 equals to, that is y of 4. That means what? Present output or response present at 2 is not depend upon, is not same as, it is what it is called future. So present output is not depend upon present input, that is because it's future. At, that means at t equals to 2 we are getting y as 2, and when input is 4. Okay, that is actually xt. ओके 4 पे हमें 2 मिल रहा है.
तो ये हमारा डायनेमिक सिस्टम है, क्योंकि सेम इंस्टेंट नहीं मिल रहा, ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, इसलिए नहीं मिलेगा. जस्ट लाइक सी y of t equals to एक्सपोनेंशियल माइनस 3t प्लस 1 ये ले लिए हमारा, और x of t, दिस इज कोफिशिएंट. अगर हम y of at t equals to 0 पे रखेंगे टाइम, तो y of 0 इज नथिंग बट कोफिशिएंट x of 0 ही है. मतलब इनपुट आउटपुट, present output depend upon the present input only. Okay, now that is present and that is also present. Okay, that means particular output response depend on the particular excitations only. Okay, okay, now see, we'll solve a different question, various question. Okay, so no need to have a problem. It is called memory, memoryless and memory system. It is memoryless, it is memory, it is having memory. Okay, now see question, next question. If y of t equals to cos of x of t. Okay, so if we take y at 0, then it will be as cos x of 0. Maximum value of cos is what? 1 now. Maximum value of cos is 1. But we are instead, it is coefficient actually. It's 0, it's also 0. That means present output value depend upon the present input value. Okay, it's constant maybe, whatever be the value. So it is static system. All are static. Static, static, static. It's dynamic. Okay, it is static. Now see, next question. If we take yt equals to dy by dt into x of t. So it is dynamic system, because if it is static, then of course static means same, that means constant, then its differentiation will be 0. That means it's dynamic now, dt is there, due to differential terms it is dynamic. This type of is dynamic. Okay, now see, for one more problem, yn equals to 9n plus 3 into x of n. Here also, if we take at y at 0 equals to 9n plus 3 x of 0, that means this present input depend upon the past output depend upon the present, both are the same, present 0 0, not future or not past, so it is dynamic static. That is memoryless system. So we can say that, let's take y of n equals to x of n square. Okay, if you take at y of 0, then it is x of 0, no problem. But y of 1 minus 1, it's take as x of 1. So that is past. If we take it past, it future. But if we take, this is our present output value, but it is future. So it is dynamic. That is memory. Okay, or we can also take as y at minus 2 equals to x at 4 हो जाएगा. ये देखो, ये हमारा -2 में है, ये 4 है, ये फ्यूचर है.